class position, class it is completely determined by the social position like economic conditions and other wealth position or political privileges. So both from a characteristic point of view, both by the nature's point of view, caste system and class system are polar opposite to each other. Both are contrasting to each other. So coming to the next slide, difference between caste and class. We will discuss the difference between caste and class. So the first important difference between caste and class, that is basically caste are found in Indian subcontinent while classes are found almost everywhere. जदि आमे टिके thoroughly देखिबा जदियो कास्ट रो एलिमेंट गुडा आमे इंडिया बाहर भी पाइबा किछिटा अन्य कंट्रीज मानन कर भी तमरो कास्ट रो एलिमेंट पाइबा, बट जो rigid form of caste system जदि देखिबा जदि इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी, वी कैन फाउंड द rigid form of caste system only in Indian society. But regarding class, it is a universal phenomena. That means wherever you go, throughout the world, across the globe, wherever you go, you will find a definite form of class position, a definite form of class system. So class system is very much universal in nature, and at the same time it is the caste that is completely unique to the Indian subcontinent. More than 2,800 caste and subcaste are present in Indian society. So caste is unique to India. At the same time, class system is a universal phenomenon. Wherever you go, you can find out class system. Then coming to the second important difference is class depends mainly on economic differences. So your economic condition, suppose तमर गोटे economic position अच्छी, suppose तमे गोटे higher class को belong करूछ, आउ जने lower class को belong करूछन्ति, कारण it is completely determined by their economic position in the society. So it is the economic condition of our society, it is the materialistic condition of our society that determine the class position in our society. So how much economy you are having with you, they determine your class position. So it is a particular kind of social status group. So class depends mainly on the economic differences. So it is the economic differentiation between the people that determine their class system. But in caste system, non-economic factors like our religion, our tradition, our rituals are most important. So whenever we are discussing about caste system, it has its own religious pattern. So it is our religious system, it is our sanction system, it is our religious faith, belief, tradition and our culture that determine our caste position in our society. So class is economic base, and at the same time it is our class system that has an economic base. Coming to the third differentiation, caste system is a ascribed but class is achieved. At the time of our birth, our caste system is determined. That means we can't change our caste system throughout our lifespan. आमर जन्म रु मृत्यु पर्यंत भीतर आमे कास्ट सिस्टम को चेंज करि परबेन. इट इज असाइन्ड स्टेटस. व्हेनेवर आमे जो फैमिली रे जन्म होचु सेही फैमिली रो कास्ट आम सहित अटैच हो जाय आमर जन्म समय रे. बट क्लास इज एन अचीव्ड स्टेटस. यू कैन अचीव योर ओन क्लास. यू कैन अचीव on the basis of your capabilities, on the basis of your hard working. जदि पिला माने तमे हार्ड वर्क करिवो, जदि भलो भाबरे मन देकी पाठ पढिबो, हार्ड वर्क करिवो, तो डेफिनेटली तमे गोटे भलो क्लास पोजीशन सोसाइटी रे पाई परिबो on the basis of your economic privileges or economic wealth condition of a society. But regarding caste system, we can't change our caste system. So जदियो किछटा प्रोविजन बहुत शास्त्र रे बहुत जण किछि कुहंती जे कास्ट को हम चेंज करि पारे बोली, बट सेमिति किछि फॉर्मल हमर प्रोविजन्स नाही कास्ट चेंज करिबार. सो कास्ट इज ए ascribed status, at the same time class is a achieved status. Then caste system is closed and rigid. There is no flexibility within the caste system. There are strict restrictions are there in the choice of occupation, in the commensality and social intercourse. Food restrictions are also there in the caste system. But regarding class, there are no such differentiation. There are no such restrictions are there. So caste system is very much rigid, but class is very much flexible. You can change. Social mobility is possible within the class, but within caste there is no such provision. Then fifth important differentiation, caste system is static, whereas the class system is dynamic.
there are two important concepts of society. One is the social static and social dynamic that is given by the father of sociology, Auguste Comte. Social static, that is the static that takes a lot of time to change. But dynamism is all about the trending part which change frequently. जोटा कि इजिली चेंज हो जाए पारे जोटा स्टैटिक जो जिनसटा सेटा चेंज होबा को बहुत टाइम लागे इजिली चेंज हे पारे इट इज द स्टैटिक पार्ट दैट होल्ड्स द सोसाइटी ऑल टुगेदर गोटे सोसाइटी को तमरो कंट्रोल करबा यूनाइट करके रखे तमरो सोशल स्टैटिक बट सोशल डायनामिक तमरो चेंज हुए फ्रीक्वेंटली हमरो चेंज हो जाए पारे हमरो मेटेरियलिस्टिक कंडीशन हमरो ये इजिली चेंज हो जाए पारे सो कास्ट सिस्टम इज ए स्टैटिक we can't change our caste system easily. It is the complex phenomena, but it is the class that is dynamic that you can change. Next slide. Then sixth point, in the class system, there are no formal restrictions on interdining, intermarriage between people, but restrictions and endogamy is the essence of caste system. कल हमें कथा आइतले Now, restrictions on commensality and social intercourse are there within the caste system. That means we can take food. आमे अन्य कास्ट ग्रुप रो फूड आमे खाई परिबेनी ताको घर हमर सोशल इंटरकोर्स बा सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करि पारे बहुत प्रकार रेस्ट्रिक्शंस रही छै कास्ट सिस्टम जदे में देखिबा बट विद इन क्लास देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन एमिति किछि रेस्ट्रिक्शंस नाही कास्ट एंडोगामी इज स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस्ड विद इन द कास्ट सिस्टम दैट मींस इंटर-कास्ट मैरिज इज स्ट्रिक्टली इम्पॉसिबल विद इन कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम भितरे आमे अन्य जाति रे जे कि मैरिज करि परिबनी एटा स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस हुए जोटा कि तमे समस्त देखिथिबो सोसाइटी रे समस्त फील करथिबो बट विद इन क्लास सिस्टम देयर आर नो सच रेस्ट्रिक्शंस आर देयर एमिति किछि रेस्ट्रिक्शंस नाही आमे हम चॉइस अनुसार मैरिज करि परिबा आमे हम चॉइस अनुसार कहा साथ संग होई परिबा सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करि परिबा सो that's why both caste system and class system are polar opposite to each other. Seventh point. Now, social classes are based on principles of achievement, but class is determined at the time of her birth. ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ନା କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ जोटा कि हम इंडियन कंटेक्स्ट ताकू जाति बोली कहूछु जाति प्रथा जोटा कि हमर संस्कृत रूट जनर आसीची जनर मींस इट इज एसोसिएटेड विथ द बर्थ जन्म कथा रो आसीची सो एट द टाइम ऑफ हर बर्थ इट इज डिटरमाइंड इट इज प्रीडिटरमाइंड बट it is the class system that can't be determined at the time of her birth. Rather, it is depends upon your social mobility, your social achievement. On the basis of your talent, on the basis of your capability, the social status you are going to achieve, on the basis of that you can achieve a class position according to your own choice, according to your own merit, according to your own capabilities. But social castes are determined at the time of her birth. Last one, caste system lacks social mobility. So again there is a concept social mobility. You as a student of sociology, you must know about that. Social mobility, that means the changing position of a social status. Social mobility is all about when a person can change his social position or a social status, that is known as social mobility. Mobility गोटे status रो आ गोटे status position को change बाटा को हमें social mobility बोली कहछे. Within caste social mobility is impossible because caste गोटे जोटे कि assigned बा गोटे रिजिड फेनोमेना जे कि तमरो डिटरमाइंड हेकि रही छी ताको तमे चेंज करि परिबनी सो द प्रोविजंस ऑफ सोशल मोबिलिटी लैक्स विद इन द कास्ट सिस्टम कास्ट भीतर सोशल मोबिलिटी रो चांस बहुत कम न थाए कहिले चले किंतु इन सोशल क्लास सोशल स्टेटस कैन बी अचीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट यू कैन अचीव सोशल मोबिलिटी इज पॉसिबल इन क्लास सिस्टम बट विद इन कास्ट इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल ओके सो caste and class are so after observing all those phenomena we can say that both caste and class are polar opposite to each other because from a nature point of view from a characteristic point of view both the features of caste system and class system are different but whenever we are taking the example of our Indian society it is your caste position that determine your class position because our Indian society we are practicing the hierarchical form of caste system that means caste system is hierarchical on the basis of that hierarchical order of the society we are putting some caste group in the superior position of the hierarchy at the same time some caste groups are placed in the lower position of that hierarchy तो जो मैंने लोअर पोजीशन रे रहले जो मैंने हायर पोजीशन रे रहले सो एठी कोन हुए ना हमर हायर पोजीशन मान को सब प्रकार सुविधा सुजोग मिले तुमे ब्राह्मण और क्षत्रिय मान को देखिबो बा समहाउ वैश्य मान को भी देखिबो से माने स्कूल को
एलाउ थिबो आगो एबे तो सेटा प्रैक्टिस एते होनी किंतु आगो काले स्कूल जाई पारुथिले मंदिर रे पसी पारुथिले पब्लिक फोन रु से माने पानी भी यूज करि पारुथिले तकर मोबिलिटी छिला मोबिलिटी ता तकर माने समानकर मूवमेंट फ्रीली से माने मूवमेंट करि पारुथिले यूज करि पारुथिले सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करि पारुथिले बट the lower hierarchy, those people who are living in the lower of the hierarchy, that is the Sudra community, ताको पे सत्य की provisions नथिला ठीक अछि so in Indian context it is your caste position that determine your class position sometime because those who are having the superior position in the caste hierarchy they we are getting a lot more privileges social privileges like economic education religion and all on the basis of that they can achieve their higher position higher status group. Okay, so जदि हम Indian context रे देखिबा, so those people who are having the higher caste position, they can acquire the higher class position in the society. But जदि हम naturalist, but जदि हम particularly feature point of view देखिबा, characteristic point of view देखिबा, both caste system and class system are polar opposite and both are contrasting to each other. So that's all about our caste system. We have covered entirely our meaning of caste, definitions of caste, then characteristic of caste, recent changes we can notice in the contemporary society. At the same time, we have also discussed about the differentiation, major differentiation between caste and class. So we have covered the first part of our Indian social structure. Now we are going to discuss about village community. This is Mukali kahithili. Now it is the Indian social structure. Social structure is all about the social arrangement. So whenever we are discussing about Indian social structure, that means how a Indian social society is arranged, what is the composition of Indian society, how Indian society is ordered, केमिति order हेची Indian society को केमिति हमें formulate करछु को basis रे को context रे को process रे को element through रे Indian society टा composite हेची. That is all about social structure and sociology is all about the study of the social structure and social function. ମୁଁ काली तुमको कहितली कथा. So see process रे जेतेबेला हमें देखुचे so basically when we are observing our Indian society Indian peninsular subcontinent the Indian social society mainly rests on the three pillars Indian caste system Indian joint family system and village community. So rural society is the backbone of Indian society we can say. Indian society को जदि हमें देखिबा जदि हमें central part of Indian society को देखिबा it is rural in nature. So village is the essence of Indian society. So already we have covered the caste system. Now we are going to discuss about village community. Village community. So you can see the picture over here. There is a picture of a village. So पिला माने आमे जेहेतु ओडिसा रो बिलोंग करू तो तम माने को गां कहिले काहा को अजणा नथिबो. तमे जत्ते भी टाउनशिप एरिया रे रहो जो भी टाउन रे रुह तमे कटक रे रुह भुवनेश्वर रे रुह बा जो भी ओडिसा रो जो भी सिटी रे तमे सिटी बा टाउन रे तमे रुह देखिबो कोठा कोठी हम समस्तकर ओरिजिन गोटे गां रो हेथाय जदियो तमेरो ओरिजिन कि काहर ओरिजिन गोटे टाउन हेथिले भी तार फोर फादर्स ता बापा ता जेजे बापा जदि हमें ताको फोर फादर्स कर ओरिजिन को हमें देखिबा समस्तकर ओरिजिन ता हमें ट्रेस कर परबा गोटे विलेज रो डेफिनेटली. So within the village community, we are going to discuss about the meaning of village community, the characteristic of village community, then how a village community is different than the urban community because rural areas and urban areas are there. So regarding the social structure, how rural social structure or the village social structure is different than the urban social structure and also the linkage. Linkage is all about the continuum between urban and rural areas. What similarity we can observe between rural and urban areas. At the same time, what are the main differences we can notice between urban and rural areas. So those parts we are going to discuss now. So next slide. Regarding the meaning, so let's discuss about the meaning of village. So समस्त को तो village माने जाना थिबा तथापि हमें टिके sociologically ताको point wise हमें discussion करिबा meaning. So the term village refers to a small area with a small population which follows agriculture not only as an occupation but also a way of life. So what do you mean by village? Now village refers to a small area. If you compare between the rural and urban area, then urban
तुम गाँ को देख गोटे लिमिटेड साइज थाए गोटे छोट एरिया को आम बुझाऊे सो द टर्म विलेज रेफर्स टू ए स्मॉल एरिया विथ स्मॉल पॉपुलेशन if we compare between the population the depth of population between urban and rural na rural area in comparison with the urban area there are small number of populations are there so the term village refers to a small area with small population which follows agriculture not only as an occupation but as a way of life gote katha iti me discussion kariba na human beings we all are human beings and we all are possessing our life on earth but the way we are possessing our life that is determined by the social interaction and social relationship. The way we are living because we all are human beings and we must possess our life on earth. But the way we are living our life, it is all about our culture. It is all about and this is basically determined by our interaction process and our relationship pattern of the society. It is completely determined by the social structural component. It is our social structure that guides our social relationship and social interaction. It is the nature of our society that is the social structure. So, जदि हमें गाँ कथा देखिबा village community कथा देखिबा so agriculture is not a occupation rather it is the way of our life. It is the way of their lifestyle. जदि तुम गाँ गुडी को ऑब्जर्व कर जे कोनोसी भी गाँ तुम देखिबो कोट ना कोटी एग्रीकल्चर थिबो गाँ गाँ रे सब गाँ प्राय तो मोस्ट ऑफ द विलेजेस रे एग्रीकल्चर होची तांकर चीफ ऑक्युपेशन आजिकल के जदियो सिनेरियो टिके चेंज हेलानी बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बानाइजेशन मॉडर्नाइजेशन सिनेरियो चेंज हेलानी लोक माने चाषबास करे को पसंद करनांती किंतु इट इज द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ ए विलेज सिस्टम जदि हम विलेज कम्युनिटी को देखिबा एग्रीकल्चर इज द सेंट्रल एलिमेंट विद इन द विलेज सिस्टम गोटे विलेज लाइफ को तुम डिस्क्राइब करे कहले विदाउट एग्रीकल्चर यू कैन डिस्क्राइब द विलेज लाइफ पर्टिकुलरली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ओके so the term village refers to a small area with small population which follows agriculture not only as an occupation but as a way of life तांकर जीवन बंचिबार शैलीटा ही होची गोटे प्रकार एग्रीकल्चर बा चाष बास जोटा कि फार्मिंग हमें कहूचे so therefore the village is clearly an important and viable social entity to its people village is an important phenomenon to the people ये गोटे बहुत स्ट्रांगली जे कि गोटे सब सब सिचुएशन जो सर्वाइव करि पारथवा गोटे स्ट्रांग फेनोमेना ह्यूमन बीइंग को सो द विलेज इज क्लियरली एन इंपोर्टेंट एंड वायबल सोशल एंटिटी टू इट्स पीपल हु आल्सो टेक पार्ट इन द लार्जर सोसाइटी एंड शेयर इन द पैटर्न ऑफ द सिविलाइजेशन आगरु हमें को कंडीशन रे हमें आसीचु हमरो ह्यूमन बीइंग आगरु हमें समस्त नेकेड रहउतलु जंगल रे तापर पर ह्यूमन इवोल्यूशन हला गोटे गोटे प्रोसेस आमे सिविलाइज्ड कि आमे गोटे जो तमर जदी क्लासिफिकेशंस ऑफ सोसाइटी देखिबा सावाजरी बारबारिज्म एंड सिविलाइजेशन गोटे सावाजरी कंडीशन रे गोटे न्यूडिटी रो कंडीशन रो आमे हम भितरे आमे बण जंगल रे रहउथुलु तापर आमे गोटे सिविलाइजेशन हला आमे गोटे गोटे प्रोसेस रे ह्यूमन इवोल्यूशन आमे हे कि आमे आज वर्तमान गोटे सिविलाइज्ड स्टेज रे पहुंचीछु तो एई जो प्रोसेस आमे देखिबा सेई प्रोसेस रे रूरल सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज हिची बट एबे भी लार्जर सोसाइटी रे सिविलाइज्ड सोसाइटी रे भी रूरल सोसाइटी हैज इट्स ओन एक्जिस्टेंस रूरल सोसाइटी चेंज हिची सत किंतु रूरल सोसाइटी रो एक्जिस्टेंस एबे भी अछि ए सिविलाइजेशन ए लार्जर सोसाइटी रे जोटा कि कहला कि ना rural society is clearly an important and viable entity a viable social entity to its people who also take part in the larger society and share in the pattern of civilization a civilized era a civilized circumstances re a civilized pattern of lifestyle re bhi rural society has its own existence thus a village community may be defined as a group because ame samaste jani chu gote layman ame jodi बिकज आम समस्त ऑरिजिन कोट ना कोटी गोटे गाँव रही था तो जब समस्त को देखा ताले गाँ समस्त अच्छी बट गोटे लेमेन को गाँ हिसाब से बुझेबा अपेक्षा आम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू टिके रूरल एरिया बा गोटे विलेज कम्युनिटी को डिफाइन करबा सो ए विलेज कम्युनिटी may be defined as a group of people living in a definite geographical area. So without having a particular geographical area, we can't say that it is a village. So every village has a geographical territory on this earth. तमे जदि ग्लोब को देखिबो ए एंटायर अर्थ को देखिबो ए पृथ्वी को देखिबो तार गोटे पर्टिकुलर लैंड थिबो सब गाँ रे गोटे गोटे लैंड अछि बुझिपछ सो विदाउट दिस जियोग्राफिकल टेरिटरी वी कैन डिस्क्राइब ए विलेज सो ए जो कांसेप्ट आसिला विलेज एंड कम्युनिटी समस्त कम्युनिटी विषय रे जानि सारिबणी कारण तुमर प्रीवियस क्लासेस रे कम्युनिटी विषय रे पढाउतला सो कम्युनिटी कम्युनिटी कोन ए
community represent a group of people who share a similar number of consciousness within them. ଯେତେବେଳେ ଆମେ similar number of consciousness को ଆମ ଭିତରେ share करू बा गोटे similar number of belief system को ଆମେ share करू बस the sense of collective sentiment माने the sense of belongingness हमरो जो attachment थाए आम प्रति हमरो जो जगह को हमें बिलोंग करू बा जो ग्रुप को हमें बिलोंग करू से ग्रुप से सोसाइटी सहित जो हमर अटैचमेंट थाए जो सेंटिमेंट हम भीतर जो इमोशनल बॉन्डिंग हमर थाए से सोसाइटी सहित बा से ग्रुप सहित हम ताको सेंटिमेंट बोली को कलेक्टिव सेंटिमेंट सो कलेक्टिव सेंटिमेंट इज द एसेंस ऑफ ए कम्युनिटी okay so village community refers to whenever there is a collective sentiment towards our village origin that is all about the village community आमे विलेज को गोटे कम्युनिटी बोली को बिकॉज़ देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स आवर विलेज तमे जते भी अर्बन एरिया रे रहो तमे माने पिला माने पाठ पढा पे बहुत बहुत दूर को आस्थिबो घर छाडी के गां रु आस्ति कि बाहर टाउन रे के पाठ पढतो बट जते परे तुम गां कथा पढे निहाती भाबरे तुमे मने पकई पातो को कि हम गां हां से समय तुमे कोन रिप्रेजेंट करो ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स आवर विलेज तमे तुम विलेज माने तुम गां प्रति गोटे बिलोंगिंगनेस गोटे इमोशनल बॉन्डिंग गोटे इमोशनल सेंटिमेंट हमें रिप्रेजेंट है सोसाइटी को मैं कहूँ विलेज कम्युनिटी सो कमिंग टू द फॉर्मल मीनिंग ऑफ विलेज कम्युनिटी दैट इज ए विलेज कम्युनिटी मे बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए डेफिनाइट ज्योग्राफिकल एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड कॉमन लाइफस्टाइल्स एंड वेरियस इंटेंसिव सोशल इंटरेक्शन सो ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया सपोज गोटे गाँव ना सपोज गोटे गाँव ना नाम हरिचंदनपुर हरिचंदनपुर गाँ कहले गोटे पर्टिकुलर लोकालिटी को बुझेबो ना एई लोकालिटी रे पर्टिकुलरली एई डिस्ट्रिक्ट रो एई ब्लॉक रे से गोटे गाँ रो ना हला हरिचंदनपुर दैट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टेरिटरी आ से टेरिटरी भितर जति के लोक रहउतबे से लोकन को हमें कहबो कि ना से माने हरिचंदनपुर गाँ रो बासिंदा सो a group of people living in a definite geographical area characterized by a consciousness of kind तांको भितर गोटे कॉन्शियसनेस थाए कॉन्शियसनेस माने तांको भितर गोटे कॉन्शियसनेस जे हां हमें से गाँ रो बिलोंग करू तांको गाँ प्रति गोटे इमोशनल अटैचमेंट तांको भितर थाए से माने कॉन्शियस थांती ऑफ देयर माने रिगार्डिंग देयर बिलोंगिंगनेस okay so a village community may be defined as a group of people living in a definite geographical area characterized by a consciousness of kind common lifestyles and various intensive social interaction समस्त को भितर गोटे कॉमन लाइफस्टाइल तुम देखो गाँ को जदि देखिबो प्राय तो समस्त लाइफस्टाइल टा गोटे सिमिलारिटी थाए डिफरेंसेस तो रहिबो वी ऑल आर हेटेरोजेनस एंटिटी आइडियोलॉजिकली माइंड रु लैंग्वेज रु हमर रिलीजन रु हम समस्त डिफरेंट बट जदि हम गोटे विलेज कम्युनिटी को देखिबा यू कैंट ऑब्जर्व सीरियस हेटेरोजेनिटी तमे माने बेसिक माने स्ट्रिक्ट डेफिनेशन माने डिफरेंसेस तमे पाइबन समस्त को भितर गोटे सिमिलर कॉन्शियसनेस गोटे सिमिलर लाइफस्टाइल देखो समस्त लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट सिमिलर थाई गोटे गाँ भितर तो सेति पे हमें ताको कलेक्टिव सेंटिमेंट गोटे कलेक्टिव ग्रुप बोली कहू गोटे विलेज कम्युनिटी को बुझी परछ सो द कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड कॉमन लाइफस्टाइल एंड वेरियस इंटेंसिव सोशल इंटरेक्शन तमे केते बेले गाँ लोकंकर कथाबार्ता सुनिछ केते डेप्थ थाए माने गोटे रिप्रेजेंट करंती गोटे मीनिंग ताको भितर गोटे डेप्थ थाए गोटे सीरियसनेस थाए गोटे क्लोज रिलेशनशिप दे एस्टाब्लिश बट इन अर्बन सोसाइटी रिलेशनशिप इज वेरी फॉर्मल लोकन को भितर कथाबार्ता शैली बहुत फॉर्मल एते कि इनफॉर्मली समान अटैच होंती बट विद इन द विलेज कम्युनिटी देयर इंटरेक्शन प्रोसेस देयर इंटररिलेशनशिप प्रोसेस इज वेरी मच क्लोज्ड ओके सो नेक्स्ट स्लाइड literally speaking a village implies a settlement of people which originated many thousand years ago during the early periods of human society हमें जदि देखिबा तले हिस्टोरिकली विलेज सोसाइटीज आर एक्जिस्टिंग बहुत पूर्वरु हमर विलेज सोसाइटी एक्जिस्ट करूची इट कंटेन ए फ्यू हंड्रेड ऑफ पीपल सते बेले कोन थिला अल्प किछि लोक सेठी रहउथिले who lived together in a surrounding of nature and whose main occupation was agriculture अल्प किछि लोक किछि सह लोक जोटी कि गोटे पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया रे रहउथिले और तांको भितरे गोटे पर्टिकुलर एग्रीकल्चर टा गोटे ओनली वे ऑफ देयर लाइफस्टाइल थिला जोटा हमें कहूछु जीवन जीविका सो दे में रूरल सोसाइटी को देखिबा दे आर लिविंग देयर लाइफ बट देयर वे ऑफ लिविंग देयर लाइफ इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर इट इज द एग्रीकल्चर दैट इज द चीप मीन्स ऑफ देयर लाइफ ताकर लाइवलीहुड ऑप्शन कहले लाइवलीहुड को हमें जीविका बोली कहू जे लाइवलीहुड ता ताकर मेन
माने जदि आम मेन लाइवलीहुड बोली देखा देन इट इज एग्रीकल्चर, इट इज द चाष फार्मिंग ये जो जिन कृषि. It contained a few hundred of people who lived together in the surrounding of nature and whose main occupation was the agriculture. तांकर main occupation टा थिला agriculture. Agriculture is not only their main occupation, it is rather their way of life. Already I have discussed. It is the way of their lifestyle. तांको जीवन जीविकार माध्यम ही होची agriculture. So agriculture is a emotion for them. देखिबो समस्त गाँ को तुम देखिबो गोटे गाँ को ऑब्जर्व करिबो देखिबो कोट ना कोटी समस्त से जिनसटा अछि समस्त भितर तांकर थाए माने तांकर समस्त किछटा जमी थिबो आ सेतिरे से माने चाष बास अल्प हो पछे अल्प बहुत हो पछे किंतु समस्त थिबो. So agriculture is the way of their lifestyle. It is a way of life in the sense that its mode of production and what it tempers is reflected in every form of village activity. तमें देख भिलेज एक्टिविटी गाँव में जी प्रकार एक्टिविटीज से करती गाँव में जी प्रकार लाइफस्टाइल अच्छी ए सबुथे रिप्रेजेंट हुए तुम विलेज एग्रीकल्चर टा. तमें देख गाँ गुड़े जिते सब पर्वपर्वाणी सेलिब्रेट हुए आमर ओडिशा तो प्राय कृषि भित्तिक पर्वपर्वाणी आम प्राय तो सब जिन तुम्हें मार्गशीर मास माणबसा गुरुवार ठू नहीं कि तुम रज संक्रांति ए सब अक्षय तृतीया ए सब हूँ गोटे गोटे कृषि भित्तिक पर्व. जदि आम तुम एंटायर जदि आम 12 मास ओडिशा हूँ 12 मास 13 पर्वर गोटे राज्य तुम्हें देखिए प्राय तो मैक्सिमम फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन आवर एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर इज नॉट ए ऑक्यूपेशन रादर इट इज ए वे ऑफ आवर लाइफ. जीवन बंचार जो माध्यम कारण आम समस्त जीवन अच्छे आम जीवन बंचा बट जीवन बंचार जो माध्यमटा को आम देखुचु ये हूँ एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली जब रूरल सोसाइटी को देखा इट इज द ओनली वे ऑफ देयर लाइफस्टाइल. सो तांकर डेली लाइफ शेड्यूल रे तांकर एक्टिविटीज रे ये क्लोजली अटैच्ड होकर रही एग्रीकल्चरल पैटर्न. So it has been said that the village is the name commonly used to designate settlement of ancient agriculturalists. जदि हमें देखिबा ना विलेज कहा को रिप्रेजेंट करे ना इट इज कॉमनली यूज्ड टू डेजिग्नेट अ सेटलमेंट गोटे सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे ऑफ एंशिएंट एग्रीकल्चरलिस्ट जो अतीत कालर बा एंशिएंट टाइम रो जो एग्रीकल्चरलिस्ट ग्रुप थिले तांकू हमें विलेज बोली कहि कि गोटे रिप्रेजेंट करछु. When we talk of the rural society we mean by aggregation of the village in the country. आम तबे रूरल सो एग्रीकल्चर इज सिनोनिमस टू रूरल सोसाइटी. जदि रूरल सोसाइटी बा विलेज सोसाइटी कथा कहबा माने हम आखि आगे आसी जीव तमे यदि आखिरे गोटे पांच विलेज तुम आखि आगे संगे संगे आसब कि गोटे जमी जमा प्राकृतिक परिवेश नदी गोटे जाइथिबो जमी रे चाष होउथबो कृषक जने चाष करूथिबे. सो इट इज ए वे ऑफ आवर लाइफ. द एग्रीकल्चर इज क्वाइट सिनोनिमस टू द विलेज लाइफ. Next slide. So for our better understanding, let's discuss some of the definition given by sociologists regarding village community. So Bogardos कहते to a villager, his village is more than just a collection of houses, lands and fields. It is a prime social reality. जदि हम गोटे गाँव लोक को देखा विलेज कहले तापई खाली ना जो दले गोटे घर समाहार बा किछि गोटे ग्रुप समाहार बा गोटे घर समाहार बोली कहले हबन. गोटे प्रकृत विलेज जदि आम गोटे रूरल लोक को पचार जो गाँ कहले से गोटे प्राइम सोशल रियलिटी दि मोड ऑफ देयर ओनली मोड ऑफ देयर एक्जिस्टेंस जदि से बंची गाँ. सो खाली गोटे नंबर ऑफ ग्रुप आम घर दले घर को देखिले जे कहबा एटा होची गोटे विलेज लाइफ सेमिति नुहे एटा होची गोटे मोड ऑफ देयर एक्जिस्टेंस. इट इज अ प्राइम सोशल रियलिटी फॉर ए विलेज. देन Mandelbaum observes that the village is clearly an important and viable social entity to its people who also take part in the larger society and share in the pattern of the civilization. It is a viable, good, strong existence village society, village community. हमारा society change होची, society change है कि विभिन्न प्रकार new form of societies are coming, but at the same time, it is the village society has its own existence. It is sharing his existence in the larger civilization. आमे वर्तमान गोटे civilized stage रचु. At the same time, this civilized stage रे भी तुम्हारा village community रे गोटे existence अछि. Then, according to Kropotkin, human society has been cradled in the rural group. सब human society कर गोटे rural group रे existence. These are the basic definitions of village society. Next slide. So now we will discuss various features or characteristic of village community. The prime source of livelihood of the rural people is agriculture, though they also get engaged in forest produce collection, weaving and dairy. लोकंकर ना जदि हमें prime
ऑब्जेक्टिव माने प्राइम ऑक्यूपेशन देखिबा गोटे विलेज सोसाइटी इट इज बेसिकली रेस्ट्स ऑन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जदियो से माने लाइफ स्टॉक फार्मिंग करती गृहपालित पशु रखा डायरी प्रोडक्ट क्षीर जातीय प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करवा बुणा बुणी करवा ए सब भी रिप्रेजेंट करती किंतु कोठना कोठी एग्रीकल्चर भी गोटे पार्ट था सो एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन देन इन द वर्ड ऑफ T.L. Smith agriculture as the collecting enterprise are the basis of the rural economy farmer and countrymen are almost similar terms so agriculture and the collective enterprises are the basis of the rural economy so the rural economic conditions ta dekhiba it is mainly rests on the agriculture and the basis of the rural economy farmer and countrymen farmer jo mane कृषक au countrymen jo mane rural area re exist karanti jo countrymen are almost similar terms so farmer au countrymen तो जब हमें रूरलाइट्स लोक मान देखा कंट्रीमेन मैंने जो मैंने लोक मैंने गाँव में रुहति जब हमें देखा कृषक मान किसी डिफरेन्सेस ना बिकज समस्त कोटना कोटी कृषि गोटे शैली मैंने पार्ट थाए देन अपार्ट फ्रॉम दिस फीचर्स द पीपल ऑफ द विलेज आल्सो एक्जिबिट होमोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन we all are heterogeneous आम समस्त भितर डिफरेन्सेस अच्छे we all are different from each other but at the same time within a village we share a similar number of consciousness within us that is the homogeneity of the population similar lifestyle तमे पाइबो then due to which they do not frequently come into conflict with each other and maintain mutual intimacy and harmony जेहेतु तांको भितर गोटे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक थाए गोटे सिमिलर लाइफस्टाइल तांकर थाए तो सामान्य बेसी कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व रहंतिनी गोटे म्यूचुअल इंटिमेसी तांको भितर थाए गोटे म्यूचुअल क्लोजनेस थाए और तांको भितर गोटे सुंदर भावर आदान प्रदान करके सामान्य गोटे हार्मोनियस गोटे पीसफुल लाइफ रे एग्जिस्ट करन नेक्स्ट स्लाइड coming to the first characteristic of village community that is the basis of social organization in India there are more than 500,000 villages 80% जदि एटा 80% थिला किंतु हमें कंटेम्पररी रिपोर्ट जदि देखिबा रिपोर्ट ऑफ 2020 65.5% of the population of India are living in rural areas India रो 65.5% population rural area रो जे recent report को देखिबा hence is much respect the future of India is very much linked with the development of villages जदि हम फ्यूचर को देखबे ना विलेज गुडा चेंज होउची डेवलप्ड हे ही चललेनी चेंजेस कि हमें अर्बनाइजेशन अर्बन एरिया रे कन्वर्ट हे गलानी बट रूरल एरिया बा विलेज एरिया रो एक्जिस्टेंस अबे भी अछि किंतु आगो को से बहुत डेवलप भी ग्रुप ऑफ पीपल विलेज कम्युनिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल गोटे लोक को नेकी केबे गोटे गां हे परिबो देयर आर नंबर ऑफ पीपल्स आर लिविंग इन ए विलेज जदियो ताकर नंबर ता कम थाए स्मॉल नंबर्स ऑफ पीपल्स आर देयर बट always village community represent a group of people within them ताको भितर गोटे ग्रुप ऑफ पीपल समस्त ग्रुप ऑफ पीपल ताको भितर थाए नेक्स्ट स्लाइड स्पेसिफिक टेरिटरी एवरी विलेजेस हैव अ स्पेसिफिक टेरिटरी विदिन देम ताको भितर गोटे स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकालिटी गोटे ज्योग्राफिकल लैंड आमे जो पृथ्वी रे अछु ए पृथ्वी रे गोटे ज्योग्राफिकल लैंड को समान ऑक्युपाई करंती विलेजेस गोटे विलेज जदि मैं पर्टिकुलरली गोटे विलेज को देखिबा ताहले ये गोटे पर्टिकुलर जदि हम ओडिसा रो सर्वबृहत विलेज कोटा भुवन जोटा पते ढेंकानाल रे अछि सो देमे देखिबा तार गोटे पर्टिकुलर एक्जिस्टेंस अछि गोटे ज्योग्राफिकल लैंड रे तमे एतिकी टेरिटरी रे एतिकी भितरे से होछि भुवन गां गोटे पर्टिकुलर गां तमे कहै सो स्पेसिफिक टेरिटरी लोकालिटी इज द फिजिकल बेसिस ऑफ विलेज कम्युनिटी जदि हम कलेक्टिव सेंटीमेंट कथा कहबा इटा होछि हमर इमोशनल एस्पेक्ट हमें गोटे इमोशन रो शेयर करू बट एवरी विलेज हैज इट्स ओन एक्जिस्टेंस फिजिकल एक्जिस्टेंस दैट इज द स्पेसिफिक टेरिटरी देन fourth characteristic smaller size in comparison with the urban areas village society are small the village society are small in number बहुत छोटो थाए कंपेयर करबा तले 80% विलेजेस रे हजारे लोक रु कम लोक रहथांती तो सेठो में जानि परथबा ना विलेजेस आर स्मॉलर इन साइज माने बहुत स्मॉल एको साइज ता बहुत स्मॉल नेक्स्ट स्लाइड significance of neighborhood within the village community or within the rural areas neighbors have their own significance गां गुडी करे हमर पड़ोसी मानकर बहुत significance थाए हमर लाइफ रे so neighborhood relationship is another significant characteristic of village life two factors namely living in immediacy on the part of the rural people and an atmosphere of fellow feeling friendship sympathy affection and love available in the rural setting जदि हम देखिबा गां गुडी को the sympathy, love, emotional bonding, these are the main characteristic of this rural society. So, a basis रे आमे हम पड़ोसी मान को सहित बहुत इनफॉर्मल वे रे गोटे इंटीमेट रिलेशनशिप रे आमे अटैच थाउ तांको सहित गोटे आम भीतर गोटे इंटीमेसी थाए तांको सहित तो सही प्रोसेस रे आमे कोन कहूना ना एवरी नेबरहुड हैज देयर ओन सिग्निफिकेंस इन द विलेज लाइफ
जदियो अर्बान सोसाइटी से जिनटा आम देखा बहुत कमिटी रिलेशनशिप बहुत फॉर्मल किंतु गाँव में जब क्या घरे किसी देखो समस्ते माइट सब लोग चली आसवे देखा कारण भर गोटे से बॉन्डिंग थाए से क्लोजनेस थाए से रिलेशनशिप भितर से बॉन्डिंग भितर सो फिफ्थ characteristic of the village community, that is the significance of the neighborhood. That means neighbors or the podosi neighbors have their own significance, own importance in the village community. Then community sentiment. Community sentiment is all about the community bonding, जो हम कहली closeness, emotional attachment towards our village. So community sentiment is all about a essence of the village. Like within a village, those people who are sharing, who are living within a village, they share a similar number of consciousness or similar number of bonding towards their village. That is the collective sentiment. Then prevalence of the next slide, prevalence of the primary relationship. So it is characterized by the preponderance of personal and such a comparatively long-lasting relation. There is relative unfusiness and genuineness. So prevalence, primary relationship ro prevalence. से सेकेंडरी हूँ जोटा कि बहुत फॉर्मल रिलेशन किंतु से प्राइमरीली अटैच था समस्त भीतर कौन से ना कौन सी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप से सब लोगों सहित अटैच था सो नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक इज द जॉइंट फैमिली सिस्टम सो जॉइंट फैमिलीज आर आल्सो द एसेंस ऑफ द रूरल सोसाइटी जब तुम गाँ गुड़ी को देखो प्राय तो समस्त जॉइंट फैमिली कैरेक्टरिस्टिक समस्त जॉइंट फैमिली थ्रो से अटैच थे सो ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली स्टे टुगेदर अंडर द सेम रूफ टेक फूड कुक्ड इन ए कमन अर्थ गोटे चुली रोसे हो गोटे छात तले रोते गोटे रोसे समस्त खाऊ जॉइंट फैमिली बोली कहू सो इंडियन जॉइंट फैमिली सिस्टम आर द एसेंस ऑफ द विलेज सोसाइटी इट इज एस्टाब्लिश्ड दैट द अमाउंट ऑफ द जॉइंट फैमिलीज इन विलेज इज मच मोर देन द दैट इन टाउन्स एंड सिटीज सो ए टाउन सिटी रिलेशनशिप रो देखा जब आम विलेज सोसाइटी एक्जिस्टेंस बहुत अधिक जॉइंट फैमिली. So these are the characteristics, and in next classes we are going to discuss about the major linkage and differences between rural and urban society. Thank you so much.